विल रिक्वायर बड़ा हाउ मेनी वैल्यूज, चलो मुझे फटाफट बताओ. You will require but total two values. One, it will be the values of x, and second, but it will be the value of p. One, it will be the value of x. Second, it will be the value of p. चलो अब मुझे ये बताओ, फॉर सॉल्विंग द सम बड़ा व्हाट यू विल हैव टू डू, क्या करोगे बड़ा तुम लोग मुझे फटाफट बताओ. You will have to draw the table बड़ा, and in that table बड़ा, you will draw बड़ा how many columns. Three columns बड़ा. First column x, second column बड़ा it will be p, and the third column बड़ा it will be p into x. Once the table will get over, what you will do? You will find the total of. You will find the total of p into x, and whatever will be the total of p into x will give you the final answer. अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, चलो ये बताओ कि expected value of a random variable, it is always considered to be as a. Positive, b, negative, c, 0, d, all about. Expected value of a random variable, it is always considered to be as. क्या तुम लोग को बड़ा मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है? कर्षा, हितेन, बाकी सब लोग बड़ा, यश, तो बड़ा बोलो, आंसर बोलो सब लोग फटाफट. क्या आंसर है तुम लोग का, मुझे बताओ. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और रैंडम वेरिएबल. नो, ये मैंने क्वेश्चन तुम लोग को पहले भी बड़ा एक्सप्लेन किया था, याद है तुम लोग को? शायद तुम लोग भूल गए हो. द आंसर इज बड़ा ऑप्शन डी. ऋषभ, इतना टाइम क्यों लगा बड़ा? एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होगा क्या बड़ा वहां पे? आंसर इज बड़ा ऑप्शन डी. अच्छा नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि सम सॉल्व करने के टाइम बड़ा क्या ये जरूरी है कि हर बार बड़ा हम लोग को एक्स के वैल्यूज और पी के वैल्यूज दिए ही होंगे बड़ा?
नो बड़ा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें एक्स और पी के वैल्यूज बड़ा दिए ही होंगे। अगर दिया है तो इट इज बड़ा वेल एंड गुड। और इनकेस अगर पता चला बड़ा कि एक्स और पी के वैल्यूज बड़ा हमारे पास सब में नहीं है बड़ा, तो बड़ा तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यू कैन डेफिनेटली बड़ा एक्सपेक्ट द वैल्यूज। एक्स एंड पी अगर नहीं दिया बड़ा, तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बड़ा। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है बड़ा, वो तुम लोग को बड़ा सब में दिया होगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड बाय नोइंग दैट बड़ा अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये देखो तुम लोग एक्स और पी के वैल्यूज बड़ा फाइंड कर सकते हो। बराबर है? चलो। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट, बड़ा टेल मी द प्रॉपर्टीज बड़ा ऑफ द expected value of a random variable. So what is E of k is equal to? Expected value of any constant. The answer is expected value of any constant. The answer is constant itself. Next, E of x plus y. Answer is equal to E of x plus y. Answer is equal to E of x plus. It is E of y. That is next. E of x minus y. E of x E of y. So by next, if x and y are the two independent random variables, तो चलो मुझे बताओ आंसर बड़ा फटाफट। E of x E of x into E of y, correct? So next, E of
k into x. What is k is a कांस्टेंट, बड़ा कांस्टेंट अकेला है या किसी के साथ? बड़ा कांस्टेंट की जगह बार हो रहा। चलो नेक्स्ट, अब मुझे ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू बड़ा वराइंस, चलो bro, tell me how to determine the variance of variance of रैंडम वेरिएबल हो। भाई मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ बेटा, variance of a random variable is given by what? Variance of random variable v of x, it is equal to v of x square minus it is e of x the whole square. चलो अब मुझे ये बताओ ना, how you will find e of x? e of x बड़ा कैसे फाइंड करना है? e of x it will be obtained better by using summation of how to find better e of x square? पापा चल करेक्ट, बड़ा वराइंस मिला तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। Standard deviation बड़ा it will be the square root of बड़ा variance, positive square root of variance। चलो विद दिस बड़ा प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट था बड़ा रिवीजन वो भी कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। अब पहले इसको बड़ा गो थ्रू कर लो, कोई डाउट रहा तो मुझे पूछो फटाफट। गिव यू 2 मिनट्स बड़ा, फटाफट कोई अगर डाउट है तो मुझे पूछो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस,
SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो बेटा, राइट ऑन नेक्स्ट न्यू हेडिंग है बेटा, theoretical distribution. Theoretical बेटा, distribution बेटा। तो भाई मुझे बता बेटा, theoretical distributions बेटा, they were being classified into how many types? Theoretical distribution बेटा, they were being classified बेटा, into how many types? अच्छा, which were the two types? एक था बड़ा discrete theoretical distribution, और दूसरा जो था बड़ा, it was a continuous theoretical distribution, right? Discrete theoretical distribution बेटा, and continuous theoretical distribution बेटा. Again, what were the examples बेटा, of a discrete theoretical distribution? Discrete के बड़ा examples क्या थे? Discrete के examples, one was binomial distribution बेटा, and another one was Poisson distribution. और continuous के बड़ा example कौन था? Continuous का फटाफट बोलो. Correct, it was a normal distribution बेटा. तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं binomial distribution. बेटा binomial distribution, it was been based बेटा upon the some assumptions बेटा, it was been based upon the certain conditions बेटा. First, but a binomial distribution, it was being used sure, but a binomial distribution, it was being used but only for the finite number of trials. According to the James Bernoulli, according to the James Bernoulli, the subsequent trials which are taking place during that experiment, they should be correct. They should be independent of each other. Next, according to the James Bernoulli, each and every trial, it shows exactly how many outcomes. Two outcomes. One, it was the failure. Very good. So आगे बताओ. According to the
according to the James Bernoulli, the probability of success, it was been denoted by small p, and the probability of failure, it was been denoted by what was the relation between P and Q? What was the relation between P and Q? P plus Q, answer is always equal to 1. Therefore, P is equal to 1 minus Q, and Q is equal to 1 minus P. बराबर है, very good. Both the values P and Q, they are greater than 0, but they are less than 1. चलो, for a binomial distribution, मुझे बताओ the value of P and Q, whether they remain constant or whether they get changed from trial to trial. So value of P and Q, it always remains constant. It always remains a constant. वो कभी भी change नहीं होता है. It always remains one or the same. चलो, अब मुझे ये बताओ फटाफट मुझे ये बताओ for binomial distribution, if I want to find the probability of getting x successes, the probability of finding x successes, it has been given by it is being given by p of x is equal to x, which is equal to p of x, which is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x. अच्छा मुझे ये बताओ here in this given formula n represents number of trials, p represents the probability of success, q represents x represents
X is the number of successes. But in a given binomial distribution, there are how many parameters? Which were the two parameters? One was n, another one was p. And since the given binomial distribution, it has the two parameters. Therefore, what we will call this given binomial distribution to be as a it is called to be as a biparametric distribution. बेटा मुझे ये बताओ in a given binomial distribution, the value of p and the value of q, whether it can be the same. And that same value, it can be a 0.5, right? The same value, it can be a 0.5. And when the value of p and q, when it becomes the same, what we call such type of distribution to be as what we call such type of distribution to be as correct. We call such type of distribution to be as a symmetric distribution where mean is equal to a median and median means is equal to more. Ready? Again, but tell me with respect to a binomial distribution, what is mean is equal to NP. What is variance is equal to NPQ. And what is standard deviation is equal to correct. It is a root of NPQ. अब मुझे ये बताओ कि with respect to a binomial distribution, tell me the relation with respect to a mean, variance, and the standard deviation. Mean, variance, and the standard deviation. Correct. Mean is greater than variance, and variance is greater than a standard deviation. But that is applicable only with respect to binomial distribution. Tell me. But a binomial distribution is option A, unimodal, B, bimodal, C, it is A or B,
ये डी करेक्ट बड़ा इट इज ऑप्शन सी बराबर है चलो विल स्टॉप हियर नेक्स्ट लेक्चर बड़ा विल कंटिन्यू विद दिस है ना और टाइम सीरीज का भी जो पार्ट है बड़ा वो भी रिवाइज कर लेंगे सब उसमें बाय ऑल ऑफ यू